Hello learners, welcome to today's session. In today's session, we will be talking about water pollution and its effect on human health. This topic is related to the course MEV-015, that is Environmental Pollution, Control and Management. This course is a part of MSc Environmental Sciences and MA in Environmental Studies program. So learners, let us now see what is water pollution, how does it occur, and particularly what effect does it have on our health. So learners, you are very well aware of this term water pollution. When we define water pollution, it means that it is the contamination of the water bodies, maybe lakes, rivers, ponds, or underground water bodies, or you can say the underground water that is also the victim of the water pollution from various sources. Now, this water pollution or the contamination may occur because of natural factors or anthropogenic, that is, man-made activities. The natural sources of the water pollution may include, for example, high speed winds or maybe volcanic eruptions, or it may be due to any disaster. So normally we see that the water gets polluted, but as it happens in the other cases, more so it is the human activities, the activities which the man does, that are more responsible for polluting the water bodies. It may also be defined as any change or modification of physical, chemical or biological properties of water that has a detrimental effect on ecology and human health. So if we look into this definition clearly, it means that there are certain physical, chemical and biological properties of water bodies. Learners, when you look at the river, by observing also you can say whether the water is polluted or not. They comprise of the physical properties of the water. Similarly, when you, for example, we were just talking about the properties of the water. So, when we look at any water body, if we find that it is very dark, if it is very muddy, if some odor is coming out of it, we may perceive and say that the water is polluted. So, the physical properties of water include temperature, color, odor. These are those properties of the water which are quite visible. We can just look at any water body and we can draw the conclusion that it is polluted water body. We have seen that how the river Yamuna in Delhi looks when it is polluted. So simple by observation, the physical parameters of the water are those which are normally seen by our eyes, which we can see. If we go for the chemical analysis of the water, then there are certain chemical parameters. These chemical parameters or chemical characteristics of water also give an idea about the extent of pollution in that water body. So, the chemical properties or the parameters of water include total dissolved solids, that is commonly known as TDS, the hardness, the acidity, the alkalinity, the electrical conductivity, the presence of various salts, the acidity, sulfates or nitrates, calcium, magnesium, iron. These are the different elements which are present in the water. And these elements have a certain specified range. If there is a deviation in that range, we may perceive and say that the water is polluted. Another important chemical properties of the water include DO, that is dissolved oxygen, that gives an idea about the oxygen content of the water body. Similarly, BOD, that is biological oxygen demand, COD, chemical oxygen demand. So these are the chemical properties of the water. And the third one is the biological properties of the water.
Biological properties of the water indicate the presence of various microscopic organisms like bacteria, virus, and other organisms. So, when we look into the physical, chemical, and biological properties of the water, we find that there is a huge deviation. Now, on the screen, you can see the table. Now, this table gives a range of the parameters and the range which has been specified according to Indian standards and the WHO standards. So, in these parameters, we are seeing that pH, electrical conductivity, total dissolved solids, total hardness, chloride, sulfates, fluoride, calcium, magnesium, sodium, potassium, and iron. What is not specified here is again the dissolved oxygen, BOD, that is biological oxygen demand, COD, that is the chemical oxygen demand. Now, there is a certain range. Now, when we conduct experiments on the polluted rivers or the water bodies of any region, the studies have confirmed that there is a huge deviation from these standards which have been prescribed according to Indian standards and the WHO standards. Take for example the dissolved oxygen. According to the set standards, the dissolved oxygen in the water body should be above 6 mg per liter. However, when we have conducted the experiments, it has been found that in several cases it is much below 6 mg per liter, and here it is noteworthy to say that the river Yamuna has zero dissolved oxygen. So it means that there is no oxygen in the water body, and in that case we may conclude that it is no longer a river but a nala actually. And this is the state of the affairs in most of the river bodies or most of the lakes and the rivers of our country. Similarly, the BOD levels, similarly the COD levels, the high concentration of the solids in it because of the deposition of the sediments, because of the underground water exploitation and the explorations which go on, there is a huge quantity of fluorides in the water bodies in various places. The strong deviation from the parameters of the various elements, minerals, and other chemical components of the water makes water unfit for use. Neither we can use it for drinking purposes, nor it is suitable for bathing and other recreational activities. So now let us see what is the current state of affairs of the water bodies of the world. According to the UN and World Health Organization, it is said that about half of the global population does not have the safely managed sanitation services because of the dearth of water. Around 2 billion people live in countries with high level of water stress, means the amount of water available is less than the required. And according to the report of Water Development 2022, it's out of the 122 countries, India is at the position of 120. That means it is believed that by the year 2025, half of the world's population will be living in water stressed environment. And studies have also concluded that every year 1% of the water requirement increases. And during last few decades, there has been 8 times increase in the water use by the different countries and the regions. The problem is that most of the water which is available on this earth is not usable form. We have only 2% of the water, that is the fresh water, and out of that also maximum is present in the form of the glaciers. The rest is present beneath the earth's surface. The water that is
fit for use, the water that is present on the surface is very less, and out of that also we are seeing that most of it has become polluted, and the polluted water makes it unfit for use. So, if we look into the various studies and the statistics, it clearly indicates that we are living in a water stressed environment. Water is getting scarce year after year, and the pollution of the water is leading to various types of diseases in us. If you just look at the figures of India, around 38 million people suffer from waterborne diseases every year, and globally 1.5 million children below the age of 5 are dying because of being exposed to the various chemicals and because of the waterborne diseases. So, when we look into water pollution and its effect on human health, mostly, or you can say broadly, we can see that the diseases occurring because of water pollution are mainly categorized into three types. There are gastrointestinal diseases, those diseases which affect our digestive system because of maybe the consumption of the contaminated water directly, or maybe it is coming through food, so that may be foodborne diseases. Second, because the incidence of skin cancers, because water is not just used for drinking purposes but also it is used for bathing purposes and other recreational purposes also. When we see to the effects of the presence of various chemicals in the body, there has been rise in the incidence of various types of skin cancers. And thirdly, it is the cancers which are increasing. So, gastrointestinal diseases, skin diseases, various types of allergies, and the cancers. When you see the different causative factors, we will mostly find that diseases are related to this. So, we must also look into what are the sources. If you look around, that you can say that most of the water pollution occurs from domestic sewages, that is the sewage which comes from the kitchens, which comes from the detergents which are present, which are being used extensively, and the wastewater which comes from the residential areas, that constitutes the major part of the domestic sewage. Then industries. The industrial effluents contain heavy metals, they contain various types of toxic compounds, and they enter into the water bodies and lead to the changes in the physical chemical properties of the water. Then population growth is one of the most important factor. Increase in population leads to increase in demand for water resources, and therefore we are noticing a lowering of the water table because there is over extraction of the groundwater for fulfilling the various needs of the rising population. So, not only for domestic purposes but also population growth is also linked to agriculture. So, in agriculture, the water sensitive, the water is used for irrigating large patches of farm, and mostly it is coming from the underground water. Then application of chemical fertilizers, pesticides in the agricultural lands, and when there is a runoff from the agricultural fields, there has been the increased concentration of nitrates has been clearly seen in the water bodies. So, that also constitutes a potent source of water pollution. Then we use plastics, and which convert into microplastics, they enter into the water bodies, they are thrown carelessly, and in the absence of proper treatment measures, most of the plastics, and not only the plastic but other types of waste also ends up going into the water bodies. So, that is why we are seeing that there is an increase in the water pollution across the rivers in the country because of the n number of factors which are mostly anthropogenic in nature. And that is why we say that urbanization is also one of the
most important reason for increase in the water pollution. In the urban areas, we are seeing that what is the state of the affairs of the you can say the lakes which are found, or in the outskirts we are seeing the state of the rivers which are mostly dying. They are not the rivers, but they are only containing the filth, they are only containing the harmful substances. And the sewage treatment plants, if they are ill designed, if they are not maintained properly, if they are not working properly, if the engineering proper is not taken care of, in that case there is no treatment and inefficient treatment, and addition of these into the water bodies disturbs the ecology of the water bodies. So these sources of water's pollution can also be categorized into point sources and the non-point sources. Learners, you must have heard about this term point sources and the non-point sources. When we can easily check the source of the water pollution, then that is the point source, where we can check that they check the point from where the chemical is entering into the water body. For example, when we say that there is a oil spill happening in the oceans, so that is the clear example of the point source of water pollution. When we can see industrial effluents directly without being treated entering into the water body, that is the point source of water pollution. But however, in most of the cases, the problem occurs because of the non-point sources of pollution, where we are not able to trace the origin of the pollutant. For example, agricultural runoff. When there are floods, when there are high rains taking place, then the runoff from the agricultural fields, from the mountains, the sediments are coming. Those sediments or the runoff contains chemicals which are dangerous, but it is not possible to locate the actual point of the discharge. So that comes under the non-point sources of pollution. Similarly, the entering of the sewage into the water bodies, or because of the construction sites at so many places we are seeing that water is getting polluted, all these are the non-point sources of the pollution. Now, let us see what are the effects, because by the various sources, as we are just discussing, that the diseases happening in the human beings because of the consumption of the contaminated water leads to gastrointestinal diseases. These diseases affect the digestive system, and mainly the causative factors are bacteria, virus, or any parasitic organisms. So let us see first of all what are the bacterial diseases. They are commonly known diseases. During monsoon, there is a more number of patients of these diseases, especially in the rural areas. The examples are cholera, diarrhea, salmonellosis, and shigellosis. Learners, on the screen you can see that what are the effects of these diseases, and when you look carefully you will find that most of these are affecting the digestive system, and the symptoms are diarrhea, maybe vomiting, maybe abdominal cramps, maybe low grade fever. So these types of diseases are very common, especially occurring because of the drinking of the contaminated water, or maybe because of the food which is being consumed which is stale. So in all these diseases we find that there is a bacteria which is responsible. The only way to protect oneself from the bacterial led waterborne diseases is to boil the water before consumption, keep it covered, do not allow any type of organism to breed into it. And see, for example, diarrhea, if we take the example of diarrhea in India, a large number of children are suffering because of the diarrhea, and many get sick very seriously if not treated on time. So diarrhea is one of the leading, it's very lethal, and it is the leading cause of death of the children before
less than 5 years of age. So that also is very important concern, like salmonellosis, shigellosis. So these are some of the diseases which are occurring because of the bacteria. Then we have the viral diseases. So virus is also gets breed in the contaminated water, and when we drink that water which contains these pathogens, we are likely to fall ill. So you must have heard about the disease called hepatitis, which is extremely lethal, which affects not only our intestines but also it can lead to loss of appetite and extreme discomfort and fatigue in the individual. Although there are vaccines available now for hepatitis A and B, but still it remains a concern in most of the rural parts of our country. So therefore, like similarly to this, it is encephalitis, polio, gastroenteritis. These are the diseases which appear to be very common, which do not show symptoms immediately, maybe after 12 hours to 5 days. That is the time taken by the symptoms to show their effects. So they appear to be very normal in the beginning, but if not treated, if due care is not taken in the beginning, it may lead to premature death of an individual. And the causative factor is only the water which is contaminated. So these all come under the waterborne viral diseases, and mostly the fever is very common in these types of diseases, and the precautions remain the same, that we should cover the water well, we should take care about the hygiene, sanitation. These are some of the important small measures which can be taken up, and we can prevent ourselves from getting infected by these diseases. Then there are parasitic diseases. You must have heard about the disease called cryptosporidiosis. So these are the the diseases. For example, if you see the giardiasis, that is the traveler's disease. It normally, you must have also felt this thing, that when you travel to a new place, because the changed standards of sanitation, the person feels sick. So there may be small issues like vomiting or loss of appetite or abdominal cramps for 1 or 2 days, but automatically it gets cured by its own. So this is because of the change in the conditions of the surroundings. Similarly, amoebiasis, galloping amoeba is the amoebiasis, which is commonly it is known as amoebiasis. So it affects the intestines of an individual, and in that also there is a fever, there is a diarrhea that also occurs because of the consumption of the water which is having parasitic organisms. Similar to this is schistomiasis, and it also has an impact on the internal organs. So in all these diseases, the waterborne diseases, we may say that water pollution has a great effect on human health, because water is consumed by each one of us. It's required, it is important for our survival, and if it is not clean, if it is polluted, if it is contaminated with chemicals, it may give rise to various types of diseases. And most importantly, in the present times, what we are observing is that the industrial effluents containing arsenic, cadmium, chromium, nitrates, these are one of the important causes of the diseases, and these diseases are as serious as the cause of as the cancers happening in the individuals. So you must have heard about the arsenic. The swimmers are prone to arsenic, because if the water has a high arsenic content, they may get affected by it. It may lead to skin disease, or in the long run it may cause the bladder cancer, or it may lead to liver cancers. This has been commonly reported, that arsenic is very, very dangerous for our health. Similarly, nitrates. Now, from where does the nitrates are coming? They are coming from the fertilizers that we are applying in the fields. So nitrate rich water is known to cause the colorectal cancer in human beings, and particularly in men, more than in the females. So that also is, if the water contains chemicals, it also makes us prone to these types of diseases. Similarly, we know that microplastics are there in the water bodies.
They are there in the air, they are there in the water bodies also, and microplastics can enter into our bodies when we drink this type of water, and it leads to various types of diseases. So learners, in today's session we have learned that water pollution is also an important concern, and we must see that how can we protect ourselves from the various waterborne diseases. Thank you. पहाड़ों पर जाना किसे पसंद नहीं। इस तरह के पहाड़ तो आपने देखे ही होंगे। चलिए आज आपको विशेष प्रकार के पहाड़ों की सैर कराते हैं। ये हैं कूड़े के पहाड़, जिनके बोझ तले दुनिया दबी जा रही है। इन कूड़े के पहाड़ों में है हमारे घरों, कार्यालयों, उद्योगों से निकलने वाली बेकार की वस्तुएं, जैसे इस्तेमाल किया हुआ कागज़, फटे कपड़े, पुरानी लकड़ी, धातु, कांच के सामान, सब्जी फलों के छिलके, पुराने मोबाइल, लैपटॉप इत्यादि। कूड़े के ये पहाड़ न केवल शहरों में बल्कि गांव में भी पाए जाते हैं। अपशिष्ट की बढ़ती हुई मात्रा और इसकी विषैली प्रकृति हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती है। कभी सोचा है इसका निपटान कैसे होता है, या क्या होता है इन कूड़े के पहाड़ों का? कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपशिष्ट प्रबंधन में प्रमाण पत्र कार्यक्रम प्रस्तुत करता है। यदि आप नगर निगम में कार्यरत हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, Dear learner, welcome to a session, very important session on international legal provisions of migration. So this is part of MA in Migration Diaspora and also PG Diploma. This topic is important. As you all know, international migration is a very important area today, because every country have some migration, and country like India, if you see just today news I heard, India already surpassed China in terms of population, largest number of population in the world. So this particularly gives us lot many issues to think in terms of migration, because population increase also lead to migration, and migration leads to many other complex issues within country, outside countries. So this topic today I will be covering host of issues concerning to legal issues
on international migration. So, I'll be talking about various types of legal framework, what legal framework actually does, and state power and responsibility, existing international framework, and I'll be talking about Indian case also, and global compact for migration, various issues and challenges, and conclusion. You all know global migration, if you see international migration, almost 3% of entire world are migrating. There are south-south migration, there are south-north migration, north-to-north migration, all will have different characteristics. As you all know, global south, which is relatively poor and labor rich but capitally poor, they send the migrant to global north, which are mostly based in Europe, America, and all advanced countries. And today, if you see, migration governance, migration management is very important, and therefore legal aspect is very important. So, because migration is very well connected with the development, it also connected with other form of problems, but increasingly we see migration is leading to development in terms of investment, in terms of knowledge dissemination, in terms of remittances, in terms of cultural multiculturalism, all area if you see migration is contributing positively. So therefore it is very important to manage it, and therefore we need to have proper legal system to manage it. So if you see recent time also, migration also was severely discussed in many areas. Migration is impacted by war, COVID-19 crisis, human trafficking. There are issues related to sovereignty of the nation, and there are so many complex issues. So therefore we need a plan, we need cooperation across the globe to manage migration for sustainable development. And what constitutes international legal framework? If you talk about international legal framework, because these are all related to, if you see international migration, migration actually is related to many other things. For example, migration itself, variety of migrants are there. Refugee migrant, those are going with free will, those are going for as student, short temporary migrant, permanent migrant, we call diaspora, this that, all those. So variety of issues are there. So law related to refugee, law related to human rights, law related to humanitarian issues, labor law, trade law, maritime law, criminal law, consular law, all these are very important, because many you find apparently not related, like you talk about maritime law, you say how it is related to migration, because maritime law also link the boundary trade and commerce, and people go with that, and many things are when there is a crisis of trade and commerce in the sea, who will take responsibility of people who are there. So everything so related. When you talk about types of legal framework, because these are also very important, we have two types of legal framework, binding and non-binding. When you talk about binding international law, these are all between countries or multilateral, which are legally very important, and everybody is bound to do that. And there is legally binding also, like nobody is compelled to do, but there is a understanding that they should do certain kind of migration governance, which is good for sending and receiving countries. So these are some of the area we will discuss also. Then there is widely ratified and
and agreed by few parties. There are certain migration legal framework which are widely ratified, like most of the convention, like 145 states have ratified 1951 convention or the 1966 protocol relating to the status of refugee. So this is widely ratified, you can say, convention or legally binding framework. There are also which are only ratified by few. For example, 2 states, 27 states, all this, there are very few countries which agreed to that. Maybe within the Europe, some countries they agreed something, within some Asian countries. So there are some agreement through bilateral, through all other mechanism where few countries are only agreeing upon certain things. What does the legal framework do? In fact, when you have a legal framework, there are also responsibility attached to that for individual state to manage the people, and there is also rights and responsibility of international migrants. You see, when you talk about human rights, people going from one country to another country as student, was worker, relating to their condition of work, wage, and other legal thing which they can take when there is a crisis. So all these are very important. Legal channels for migration of persons seeking work opportunity in other countries, protection of rights of migrant and their families, protection of refugee, prevention and prosecution of human smuggling and human trafficking operations, return, readmission, reintegration. So these are some of the very important area where we talk about powers of state powers and responsibility. If you divide this broadly, these are three types. One is relating to national security, that I'll talk again. Entry, stay and exit, consular protection and assistance. When you talk about national security, today if you see across the globe, there are issues related to terrorism, there are issues of smuggling, issues related to so many things that affect nation directly or indirectly. So migration has to be it should be in harmony with the state interest. Otherwise, many states they stop migrant. For example, in India, we have different rules for different type of migrant coming from Pakistan, Bangladesh, from USA. We have different kind of rules for them, legal procedure. So also in USA, security is very important. That's why the scrutiny and all changes. Some countries they get permanent visa free entry. Some country people they don't get visa also. Very difficult to get. So those are related to security. Then entry, stay and exit. There are also, for example, if you are from Europe and going to Europe, you have a different type of entry, stay and exit procedure, and rules apply differently compared to those are going from India. And there are also relating to working class people, student and many others. So these are all very important. The Universal Declaration of Human Rights as well as International Covenant and Civil and Political Rights ICCPR specifies that nationals have the right to leave, re-enter and their countries. So suppose some people they have gone from India to other countries, they can come back anytime. Any nation will welcome them. Like India, if we see, we have 18 million migrant stock, which is largest in the world, and they have the they have freedom to entry exit anytime in India. Many are coming back in last 5-6 years, almost 5 to 6 million people they have come back and they settled in India. Then there is consular protection and assistance. Consular protection you all know, maybe some of you may be familiar also. This is relating to issuing passport,
travel document, visa to of the sending state. So also when you go abroad to other country, you get services from your embassy or consulate. So these are all given to the migrant in terms of when there are crisis or no crisis. Okay. Then let's talk about some of the existing international legal framework. I'll talk one by one, but due to shortage of time, I'll not go into detail. One such thing is International Covenant on Civil and Political Rights, ICCPR. Then International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, ICESCR. The Convention on the Elimination of all forms of discrimination against women. The International Convention on the Elimination of all forms of racial discrimination. The Convention on the Right of the Child, ILO Convention. UN Convention on Rights of all migrant workers on members of their family. Special Rapporteur on the Human Rights of Migrant Workers. Regional legal instrument and activities. These are some of the legal, you can say legal framework which are widely accepted across the globe and by UN, between countries and all this. Then there is a limited ratification of the MWC. Well, I told some of them are widely accepted, agreement. Some of them are very limited. Okay, like for example, there are a few area where you find between few countries only they agree. Like only 27 countries have ratified the Migrant Workers Convention, with no major receiving country among them. Why are the states reluctant to ratify the convention? Because of several reasons. As I mentioned, national security is one. Between the country, there is no level playing field, there is no agreement. So that's why in some area you find only few countries are agreeing. Okay. Then these are some of the things. I will not go into details, but these are where few countries only agree. Then what are the types of agreement? If we see in the context of India or many countries, there are two types of agreement. One is labor manpower agreement, especially labor. It is related to labor, like people are going for job and employment. Then there is a migration and mobility partnership agreement, which is more broad actually. It includes also labor, it also includes many other categories like students, businessmen, tourists, many other area. Okay, and if you see the first one, this is especially you find many labor and manpower agreement between especially the labor sending like receiving countries like India to GCC countries, many Gulf countries, Qatar, Abu Dhabi and all, Oman, Bahrain, Saudi Arabia, Jordan, UAE, all this area, all these countries have LMA, Labor Manpower Agreement. You have also the second category, Migration and Mobility Partnership Agreement among EU countries. Okay, there are also countries which are major destination, but we don't have much, such kind of agreement which needs to be done. When you talk about European Union, there are many things happening. Last at least one decade, you find lots of proactive, engagement of India and EU, and many countries, in fact, already signed. I'll be talking about them, but this is the area. If you see, especially EU, India has lot many migrants. United Kingdom, you see the number of stock of Indian migrants in major countries, UK, Italy, Germany, France, Netherlands in 2007 statistics. Then if you see the entire European Union, you find so many categories of workers
who can go workers or who can go as a tourist or employer or so many, and there are so many variety of directives you can see: long-term resident, Schengen, border code and visa, employer sanction, seasonal workers, and so many area, you know, European Union and India you can find. Then if you see the main legislation regulating migration and safeguarding the welfare of Indian migrants, you see, if you see the entire evolution, you can find the first one is Immigration Act 1983, and its successive amendments were there also. The Foreigners Act 1946, Passport Act 1967, Pre-Departure Services, services for Indians abroad. So these are some of the legal framework which Indian government doing for Indian migrants. Then if you see the kind of number of fast residence permit issued to Indians within the EU, you can see this many fast resident permit in 2015 to 2017. Irregular migration is another big area actually. Many agreements are actually targeting this. If you see any European country, they are encountering, even USA, you must be hearing many times, lots of immigration, illegal immigrants are going because they don't find the legal mechanism so facilitating. So many are going for work and other thing illegally. And if you see last 1 year in the UK, parliament debates are related to irregular migration, and India is one of the leading irregular migrant sending country in UK and Europe also, many countries. So these are all, it is actually responsibility of both sending and receiving country to see how best we can manage migration. I'll talk briefly about few countries. First, let's see Germany. Already India signed migration agreement with Germany, and to facilitate student mobility, other mobility of various cultural professionals, journalists, academics, skilled worker, all those areas. As I mentioned, this agreement encompasses a vast area of migrants. Then you find this is just signed by our external minister Dr. Jaishankar very recently with Germany. So comprehensive migration and mobility partnership is very important within Germany. We had with Germany, it was signed 5th December 2022, very recently, and many other countries also happening last 2 years, 3 years, with Austria, with other country, France. I'll be talking about them. This is with Austria. Austria also received good number of illegal migrants from India, which is a big concern, almost 15,000 illegal migrants from India. Then partnership with France, very recently, 2016, we had agreement. Then host of area, means so many articles are there relating to circulation of person, short stay, multiple entry visa, student visa, professional, return of the person. So all this on irregular situation. So many area with France recently India agreed to facilitate. These are all under broad category of migration and mobility partnership. Now if you see GCC country, that is another area, big area. In fact, if you are familiar with international migration, GCC received the highest, put together GCC receives highest number of migrants from India. Total if you see 18 million migrants, GCC takes almost 8 to 9 million migrants put together, Jordan and all. So India, the first such agreement was signed with Qatar
in 1985, then followed by the other states like Kuwait in 2007, Oman in 2008, Bahrain 2009, Saudi Arabia 2016, Jordan 2018, UAE 2018. So all this gradually, actually this is the largest corridor, and Gulf countries, and India is almost every state is affected. Kerala, Bihar, UP, Orissa, many in Punjab, Haryana, every state is sending migrant to GCC, and this is very important for them also, for India also, to see how better we can facilitate. And if we see, this is the number in Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar and all, it is total 8.5 million as I mentioned. So this is a huge destination area, and that needs lots of legal and other facility. Then the next one is coming in a big way as a part of this SDG 2013. It is to complement that, it got the idea from that, and this GCM, Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration, it is very important, and the concept was formally endorsed in the United Nations General Assembly on 19th December 2018. After that, you see IMRF, last year it happened, and then all the round 1, round 2, round 3 will happen very soon before we reach 2030 SDG, and it is part of the sustainable goal, how to support international cooperation on governance of international migration. It is very comprehensive plan to take into account many other factors which are legally, some part legally binding, but most of the not binding, because it is based on the free will of the various labor sending and receiving countries. It has lots of flexibility in terms of how to pursue, because every country has its unique experience on migration, uniqueness in handling migration, uniqueness of their own migrant skills and others. So it is given to their own countries free will, flexibility to accept. But this is one of the most advanced form of legal framework available till today. GCM is framed inconsistent with target 10.7 of the SDG 2030, in which member states committed to safe, orderly and regular migration. So there are also challenges. If you see what are the legal framework challenges, you see there are so many challenges. We saw recently COVID-19, many countries failed to actually respect the human rights issues and all. During crisis, you saw even Russia war, Ukraine, so many people, they couldn't migrate safely, and within Russia, within Ukraine and other places, we find lots of migration chaos, managing them. Then when there is a change of regime also, we find lots of changes in legal framework. You have seen during USA, during Trump rule, we talk every day almost talking about international migration, Mexico wall and all this. So there are very important thing we see, and there are also very limited coverage migration legal framework. As I mentioned in my earlier slide, that very few area you find only few countries agreeing. So these are all some of the challenges, but considering the importance of international migration, considering the India's leading position in terms of international migration, this is the largest labor sending or international migrant country sending countries, and it will grow next 20-30 years. You will see, because of population increase, India will be the leading country till another 20-30 years, till because the demographics
of the entire world is changing now. China, which was populated, most populated till the last year, now it is aging. Many of the Asian countries are also aging. So it is in India's favor, India's advantage to see how best migration we can manage, and this how best we can go with various agreement, understanding with various countries through various legal framework, so that Indian migrants will find a safe, you know, joining, coming back, rehabilitation in all area. And I must say that it is very important for everyone, policy makers, NGOs, educational institutions, see how best we can be informed about Indian international migration, how best we can actually cooperate, because when a migration crisis happen during COVID-19 or war, you find all come together, not just government. It is not just the role of government of sending and receiving countries, but also civil society, educational institution, media. So migration is very important area to deal with now, and legal frameworks are very important. So we should see how best migration can be managed. With this, I'll stop. Thank you. Do you know that the world's population has reached 8 billion on 15th November 2022? And we are still counting. I don't know where do we go from here. The predictions are scary. Any idea how many people can Mother Earth sustain? India's growing population is a serious concern, and we are soon going to become the world's most populous country. Wow, number one. Population is, after all, a human issue. The UN proposed Sustainable Development Goals cannot be achieved unless and until we consider the population dynamics. So, here we are. Indira Gandhi National Open University offers appreciation course on population and sustainable development. The course explores the linkages between population and sustainable development. In this course, there are diverse issues related to population, environmental safety, livelihoods, human health, migration, urbanization, and much more. The course duration is 3 months, but of course, you can complete it within a year. The eligibility of the course is graduation from a recognized university. So, if you are a development professional, working in a government sector, researcher, or keen to know more about the population and sustainable development, the course is must for you. Hurry up and join this course so that we are able to convert population into demographic dividend and not convert it into demographic disaster. For more information, visit www.ignou.ac.in. Thank you.
18th century debate, part 2. We are going to discuss 18th century debate, the part 2. So to begin with, let me give you a recap of what we discussed in the part 1, because then you will be able to understand the context in which we are going to discuss today's questions. 18th century is an era of excessive or major transitions in the sense of political transitions as well as the political transitions. We were also discussing the details of those transitions, and we'll be elaborating that with the help of the historiography. In terms of historiography, we discussed that it's primarily discussed as the Mughal era is primarily discussed as military fiscal state, and then the decline of Mughal empire is seen in the context of Jagirdari crisis. And in that context, we discussed thoroughly and briefly mentioned Satish Chandra. The issue of historiography is important for us to understand in a sense that the 18th century, when we discuss the transitions, then we need to understand what kind of transitions, what were the processes of those transitions. And when we examine those processes, it is important for us to understand what are the factors which were contributing to those processes. It's the state which is important. The state means the Mughal empire, or the regional states or the regional polities, or the external factors like the coming of the European trading companies, East India companies, or there are other factors which are playing important role. So we need to discuss those with the help of the historiography, which is very rich for 18th century India. We have discussed the military fiscal state because you have been following this discussion on the India in 17th century with this course, that BHIC 112. We discussed the Jagirdari crisis, and I will be elaborating more on Jagirdari crisis and then going to examine the agrarian crisis and the re-examination of agrarian crisis. To move on, what we discussed last time, today we'll begin with the Nur Hasan. नूर हसन साहब कहते हैं कि जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन है, जो मुग़ल रेवेन्यू सिस्टम है और जो मुग़ल नोबिलिटी का स्ट्रक्चर है, उसको समझने के लिए आपको रोल ऑफ ज़मींदार को समझना ज़रूरी है. रोल ऑफ ज़मींदार, इसको अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हु आर ज़मींदार्स, जो फिल्में आम तौर के ऊपर हिंदुस्तान में दिखाई गई हैं, उन फिल्मों में जो ज़मींदार की भूमिका या जो ज़मींदार की इमेजरी है, उससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. ज़मींदार का यूजली ट्रांसलेशन हमें देखने को मिल जाता है लैंडलॉर्ड. नहीं, ज़मींदार लैंडलॉर्ड्स नहीं है इन द सेंस जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं. हम लोग बात कर रहे हैं ज़मींदारी राइट्स की, जो ज़मींदारी अधिकार है. क्योंकि ज़मींदार, मैंने पहले भी एक बार कहा है, बट आज आपको कॉन्टेक्स्ट में लाने के लिए let me explain that. The zamindars are the mediators or the intermediaries through which Mughal land revenue system is functioning. In another word, let me explain that. जो एग्रेरियन प्रोडक्शन हो रहा है, जो कृषि उत्पाद हो रहा है, उस कृषि उत्पाद को जनता से या पीजेंट्री से या किसान से वसूला जाना है. जो स्टेट का शेयर ड्यू है उसको वसूला जाना है. और ये जो वसूली हो रही है, इस वसूली में, इस एक्सट्रैक्शन में ज़मींदार आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द लोकल पीपल. ज़मीन पे वो बैठे हुए हैं. तो ज़मींदारी राइट्स की जब हम बात करते हैं तो ज़मींदारी राइट्स के मतलब ये हैं भूमि से होने वाली आय का एक पैतृक अधिकार, which means a hereditary claim in the share of agrarian produce, and it has nothing to do with the political system. कोई भी राजा रहे, कोई भी राजतंत्र रहे, it doesn't influence that. It's a traditional right, it's a hereditary right enjoyed by the local elite in that region. Not all of them enjoyed, but those who enjoyed, we term them as zamindars. They might be owning the land. That's a different story. उनके पास अपनी ज़मीन है, they are landlord in that sense, that is a different story. But when we say zamindar in the Mughal context or the Mughal administration or in the Mughal land revenue system, then we are primarily discussing the component of Mughal land revenue administration who is almost based at the village level, and he is mediating the collection of land revenue from the villages. मैं दूसरे रूप से आपको ये बात समझाऊं कि जो कृषि का उत्पाद हो रहा है उसकी गणना जो की जा रही है, उसका जो असेसमेंट किया जा रहा है, दैट इज बीइंग डन ऑन द इंडिविजुअल पीजेंट. वो एक एक किसान के ऊपर किया जा रहा है. वेयर एज द कलेक्शन इज बीइंग डन एट द विलेज लेवल. मतलब जो रेवेन्यू वसूला जा रहा है वो गांव के स्तर पे हो रहा है, और जो रेवेन्यू की गणना की जा रही है, असेसमेंट किया जा रहा है, जो उसका मापतौल की जा रही है, वो एक एक इंडिविजुअल किसान के द्वारा ओन की गई भूमि के ऊपर की जा रही है. तो जब विलेज के ऊपर इकट्ठा किया जा रहा है, सो वहाँ के ऊपर जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन हमारा मौजूद है, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का जो सिस्टम मौजूद है,
उसको हेल्प कर रहे हैं ये लोकल पावरफुल एलिट्स, क्योंकि ये एक वेस्टेड इंटरेस्ट है इनको कि जो रेवेन्यू वसूला जा रहा है उस वसूले गए रेवेन्यू का एक हिस्सा भी इनको मिल रहा है। एक पैतृक अधिकार है, दे हैव वन हेरिडिटरी राइट, दैट्स डिफरेंट। हियर दे हैव अ पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव राइट कि जो वसूला जाएगा उसका सर्टेन पोर्शन उनको दिया जाएगा एज अ सैलरी और एज अ कंपनसेशन फॉर द रिकग्निशन ऑफ द वर्क विच दे हैव बीन डूइंग, कि दे आर helping the Mughal administration in collection of the land revenue. So zamindars play a very important role, और इस रोल को हाईलाइट किया प्रोफेसर नूरुल हसन ने। एंड जमींदार का एक और कॉन्टेक्स्ट को मैं समझा दूं तो आपके लिए आगे की जो बातचीत है उसको समझना आसान होगा। जो मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम चल रहा है उसके अंदर जागीरदारों की भी मैंने बात की आपसे, एंड जागीरदार आर रेवेन्यू असाइनीज, जिनको भूमि से होने वाले आय का वो हिस्सा जो स्टेट के पास जाता था वो जागीरदार को दे दिया जाता है। Which means if I am a Jagirdar, I don't have any hereditary or any proprietary right over the land revenue or over the land. I simply has a right to collect the land revenue or the share of the crop which is due to the state. It will come to me. जिस खेत से जिस ज़मीन से होने वाला रेवेन्यू डायरेक्टली स्टेट को जाता है वो इलाका खालसा कहलाता है, हमने पहले भी बातचीत की है। तो जो ज़मींदार हैं उनको आपको इस रूप में समझना पड़ेगा कि जो लैंड रेवेन्यू असेसमेंट चल रहा है, जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन का पूरा स्ट्रक्चर जिस पे बेस हो रहा है उसमें एक क्रूशल लिंक है ज़मींदार, और वो नोबिलिटी या जिसको आप जागीरदार कह रहे हैं उससे कांटेक्ट में है। आप सब जानते हैं, मैं फिर से उसको रिटेरेट कर रहा हूं कि जो जागीरदार हैं दे आर ट्रांसफरेबल, आज यहाँ हैं कल वहाँ परसों वहाँ, बट जमींदारी इज नॉट ट्रांसफरेबल स्पेशली इन द बिगनिंग ऑफ द सिस्टम। तो जो जमींदारी है वो अपनी जगह पे बेस्ड है। तो जागीरदार आ रहा है, जा रहा है, नया जागीरदार है, पुराना जागीरदार है, इट इज़ द लोकली अवेलेबल जमींदार who is helping the jagirdars in the collection of land revenue. So it becomes a kind of tripartite agreement, जागीरदार, जमींदार एंड द पीजेंट्री, जागीरदार, जमींदार एंड द पीजेंट्री। ये मैं आपके लिए इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि जब नूरुल हसन साहब ने जमींदारों के रोल को बहुत खूबसूरती से समझाया तब ये बात समझ में आनी शुरू हुई कि हमें बहुत क्लोजली एग्जामिन करना पड़ेगा जमींदारों की भूमिका को भी। मैं इसके ऊपर बातचीत बाद में करूंगा जब री एग्जामिनेशन ऑफ जागीरदारी की हिस्टोग्राफी या जो उससे संबंधित लेखन उसकी बात करूंगा। बट लेट मी गो बैक टू द अदर इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ दिस डिबेट, दैट इज एग्रेरियन क्राइसिस, या जिसको हम कृषि संकट कहते हैं। इसको प्रोफेसर इरफान हबीब ने प्रपोज किया। उनका कहना था कि जो मुगल सिस्टम था दैट वाज वेरी एक्सप्लॉयटेटिव, बहुत ज़्यादा शोषण करता था, एंड अ लॉट ऑफ रेवेन्यू वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द विलेजेस, और जो कि विलेज से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है लैंड रेवेन्यू, इसलिए वहाँ के ऊपर पॉवर्टी आ रही है या वहाँ के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। इन अदर वर्ड्स व्हाट इज ऑल्सो सीइंग दैट कि चूंकि जागीरदार ट्रांसफर हो रहे हैं लगातार, सो दे हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट इन द प्रोडक्शन और इन द इंकरेजमेंट ऑफ द एग्रेरियन प्रोडक्शन इन द एरिया। जो इनको मालूम है 3 साल बाद वो यहाँ से चले जाएंगे, एट द मोस्ट 3 साल रह सकते हैं, उसके पहले भी ट्रांसफर हो सकते हैं। सो दे हैव नो रियल इंटरेस्ट, और जो जमींदार है उसका रियल इंटरेस्ट तो है, बट ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम। तो जो पीजेंट्री है उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसकी वजह से वो पलायन कर जाए, इट इज माइग्रेटिंग और इट इज मूविंग आउट। सो इरफान हैबी प्रपोजेस दैट in the phase of Mughal decline, it is the agrarian crisis which plays very important role, simply because now the land revenue is shrinking, मतलब जो उत्पादन हो रहा है वो श्रिंक कर रहा है, क्योंकि जो पीजेंट्री है वो भाग जा रही है, वो जगह से पलायन कर जा रही है या वो खेती का काम छोड़ दे रही है। ऐसा नहीं है कि खाली भाग जाती है, पीजेंट्री नेगोशिएट करने की भी कोशिश करती है, और वो नेगोशिएशंस जो मैंने ट्राइपार्टाइट की एक्सप्लेनेशन आपको दी थी उसके अंदर यूजुअली दे अलाइन विद द जमींदार एंड दे अपोज द जागीरदार, मतलब इन दिस त्रिकोणीय संबंधों के अंदर दे अलाइन विद द जमींदार एंड दे लीव अवे द जागीरदार। तो जब जागीरदार की इनकम कम हो रही है तो जो मुगल सिस्टम है वो कोलैप्स कर रहा है, क्योंकि जागीरदार बेसिकली मनसबदार हैं, और ये वो लोग हैं जिनके सहारे मुगल एडमिनिस्ट्रेशन या मिलिट्री फिस्कल स्टेट जिसको हम बोल रहे थे, उनकी मिलिट्री भी मेंटेन हो रही है और उनका स्टेट भी मैनेज हो रहा है। तो जो यहाँ से रेवेन्यू मिल रहा था उससे मुगल और मुगल की सेना, मुगल की नोबिलिटी, मुगल के मनसबदार, मुगल के जागीरदार अपनी सेना भी मेंटेन कर, जिसको हम लोग जात या सवार या घुड़सवारों की सेना को मेंटेन करना कहते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट फोर्स दे वर एबल टू प्रेशराइज द जमींदार। So there is this tripartite relationship is very important. जो त्रिकोणीय संबंध बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बट
इरफान साहब कह रहे हैं चूंकि देयर इज अ डिसबैलेंस इन दैट, बिकॉज जो जागीरदार है वो ट्रांसफरेबल है तो ओवर एक्सप्लॉटेशन कर रहा है, एक्सप्लॉटेशन का बर्डन जमींदार शिफ्ट कर देता है पीजेंट्री के ऊपर, सो पीजेंट्री इज रिवोल्टिंग और माइग्रेटिंग और मूविंग अवे. बट very soon these historians who are working on this theme, they realize that this is not a complete picture and there's a problem with this formulation. क्योंकि 18th सेंचुरी में ट्रेड बढ़ रहा है, 18th सेंचुरी में ओवरऑल इकोनॉमी ग्रो कर रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स कोलैप्स कर रहे हैं, द सेंट्रलाइज्ड एम्पायर इज कोलैप्सिंग, बट दैट्स अ डिफरेंट मैटर. जो एग्रेरियन इकोनॉमी है दैट इज एक्सपेंडिंग. हम यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज का एक्सपेंशन देख रहे हैं इसका इस एरा में, और उनके एक्सपेंशन के संग ट्रेड बढ़ रहा है. ट्रेड विच इज प्राइमरली बेस्ड ऑन दी प्रोडक्शन, जो खेती से होने वाला जो प्रोडक्शन है वो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. सो ये कह देना कि लैंड रेवेन्यू और द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज डिक्लाइनिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, एंड दैट इज वेयर द री एग्जामिनेशन ऑफ क्राइसिस कम्स. कि जो मुगल क्राइसिस हो रही है, जो मुगल डिक्लाइन की क्राइसिस है, उसको रिविजिट करना पड़ेगा. उसमें जेफ रिचर्ड्स, एम.एन. पियर्सन और पी हार्डी मेजर इंटरवेंशन करते हैं. उनका एक आर्ग्यूमेंट है, और वो भी जैसा शुरुआती दौर में मैंने कहा था कि वो एग्जामिन करने की कोशिश करते हैं कि क्या जो औरंगजेब का डेक्कन एक्सपेडिशन है उसके भी कोई भूमिका है, क्योंकि मुगल डिक्लाइन में डेक्कन एक्सपेडिशन को बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस दी जाती है. विच मीन्स कि जो डेक्कन में एक्सपेंशन हो रहा है उसमें मुगल रिसोर्सेज ड्रेन आउट हो रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से मुगल सिस्टम जो कोलैप्स कर रहा है. सो एम.एन. पियर्सन लोग इस बात को कहते हैं, मानते हैं कि हाँ डेक्कन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लेकिन एम.एन. पियर्सन ये भी कहते हैं कि जिस तरीके से कन्वेंशनल हिस्टोरियंस ने और जो मुगल एम्पायर सेंट्रिक हिस्टोरियंस हैं, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि मुगल एम्पायर वॉज वेरी वेरी सेंट्रलाइज, इट्स नॉट ऑल दैट सेंट्रलाइज. द मुगल रूल और द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इनडायरेक्ट, और जो इनडायरेक्ट होने में वो दो चीज़ों को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं. एक, अब्सेंस ऑफ इम्पर्सनलाइज ब्यूरोक्रेसी, मतलब जो ब्यूरोक्रेसी है वो इम्पर्सनलाइज नहीं है, इट इज सोली डिपेंडेंट ऑन, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी एडिफाइस है, इट्स सोली डिपेंडेंट ऑन द पर्सन ऑफ द किंग और पर्सन ऑफ द एम्परर. जो भी राजा रहेगा, जो भी रूलर है, वो इंपॉर्टेंट है, उसकी भूमिका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो अपॉइंट कर रहा है किसी को नोबल, किसी को जागीरदार, किसी को मनसबदार. सो इट्स नॉट इम्पर्सनलाइज, इट्स वेरी पर्सनल. राजा की विश है, उस व्यक्ति की जीनियोलॉजी हो सकती है, उसके पैतृक अधिकार क्या रहे हैं. सो ऑल दैट फैक्टर्स इज प्लेइंग इंपॉर्टेंट रोल. इट इज नॉट and cannot be compared with the modern democracy, modern bureaucracy. Should not be confused. तो जेफ रिचर्ड्स का कहना ये है, in the absence of this impersonal bureaucracy, there is a crisis in the system. क्योंकि जैसे ही एम्परर कमज़ोर होगा या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन कमज़ोर होगा, दिस सिस्टम इज बाउंड टू कोलैप्स. और इसका एक और डायमेंशन जो वो आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं कि चूंकि मिलिट्री एम्पायर है, मिलिट्री फिजिकल एम्पायर, तो विद द एक्सपेंशन उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि जैसे नए इलाके जीतते जा रहे हैं तो वहाँ से होने वाला रेवेन्यू इनको सस्टेन कर पा रहा है, क्योंकि जो आर्मी मेंटेन की जा रही है उसका खर्चा निकालने की जद्दोजहद जारी रहती है. देयर इज ऑलवेज अ टसल हाउ टू मेंटेन दैट आर्मी, एंड फॉर दैट you have to engage that army. That engagement is in the territorial expansion. The moment territorial expansion ceases, there is a problem how to maintain, what to do with this army. Ultimately, they are dependent on the land revenue system. So, because this structure is primarily military की ताकत से आप revenue वसूल रहे हैं और revenue के सहारे आप military maintain कर रहे हैं. So, there is any disbalance in this, the system is bound to collapse. Moreover, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम है, इट्स नॉट इम्पर्सनलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी, सो इट्स वेरी मच डिपेंडेंट ऑन द पर्सन ऑफ द किंग. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन बाय जेएफ रिचर्ड्स, एंड ही एग्जामिन्स द डॉक्यूमेंट ऑफ द डेक्कन, प्राइमरली डेक्कन के इलाके के डॉक्यूमेंट एग्जामिन करते हैं, और उसके सहारे वो इस बात को आर्ग्यू करने की कोशिश करते हैं. इसी कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बेजागीरी को भी क्वेश्चन किया, मतलब ये कहना कि जागीर नहीं अवेलेबल थी क्योंकि मुगल एक्सपेंशन डेक्कन में हो रहा था, इज अ प्रॉब्लमेटिक प्रपोजिशन. वो ये तो कह रहे हैं कि मुगल का डेक्कन एक्सपेडिशन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, बट ही इज ऑल्सो क्वेश्चनिंग द बेजागीरी. वो ये मानने को तैयार नहीं है कि जागीर की संख्या कम हो रही है क्योंकि लैंड रेवेन्यू कम हो रहा है. रेदर ही एस्टेब्लिशेस दैट कि दिस इज द एरा जहाँ के ऊपर औरंगजेब खालिसा लैंड का प्रपोर्शन बढ़ा रहा है, एंड द लैंड अवेलेबल फॉर द रेवेन्यू असाइनमेंट इज डिक्लाइनिंग, विच मीन्स जो टोटल एक्सपेंशन हो रहा है उस एक्सपेंशन का बहुत बड़ा हिस्सा औरंगजेब अपने खालिसा लैंड में रख ले रहा है, विच इज बीइंग सेंट्रली गवर्न, सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड. सो
तो जो it is not the crisis of the non-availability of land revenue resources. Rather, it is distribution land revenue in sense of it's being marked out, it is being carved out for the Khalsa land and is not made available for the Jagirdari or the Jagirdars. So it's a difference in that context. And he says administrative reasons are very important role, क्योंकि आपको उसको संभालना आसान नहीं. The system is not all that well geared. और उसके reasons भी हैं जिसको हम और पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट हम अभी आपको और उसको डिबेट में समझाएंगे भी when we will examine the Satish Chandra's intervention. Satish Chandra ने इस डिबेट को almost settle कर दिया when he revisits the question of Jagirdari crisis. And then he also examines all these theories, and then he says that you need to understand, you need to locate the Jagirdari crisis in the larger functioning of the agrarian production and land revenue system. वो कह रहे हैं खाली जागीरदारी सिस्टम को इन आइसोलेशन नहीं समझ सकते हैं. आपको उसको समझने के लिए जो नेचर ऑफ एग्रीन प्रोडक्शन है, द एग्रीन सिस्टम, उसको समझना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो लैंड रेवेन्यू वसूलने का तरीका है उसको समझना पड़ेगा, बिकॉज देयर इज अ प्रॉब्लम इन बोथ द स्ट्रक्चर्स. तो इस कॉन्टेक्स्ट में सतीश चंद्र साहब आपको एग्जामिन करते नजर आते हैं, और ही रिविजिट्स हिज ओन फॉर्मुलेशन ऑफ जागीरदारी क्राइसिस. एंड देन ही सेज दैट इट इज द ट्राइपार्टाइट, जिसकी मैं अभी आपसे बात कर रहा था, जागीरदार, जमींदार एंड पीजेंट्री के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, डिसबैलेंस हो रहा है, दैट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एज वेल एज द एक्सपेंशन और एक्सपेंडिंग डिमांड्स ऑफ द नोबिलिटी, क्योंकि नोबिलिटी बढ़ रही है, लगातार नोबिलिटी का एक्सपेंशन हो रहा है, और उस एक्सपेंशन को सस्टेन करने के लिए इतना आसान नहीं है. सो ही इज ट्राइंग टू से दैट द जागीरदारी क्राइसिस on one hand is an institutional administrative problem, on the other hand it is also problem in the character of the social relations. जो social relations जिनके आधार के ऊपर मुगल सिस्टम एग्जिस्ट करता है, उस social system की प्रॉब्लम, उस social composition की प्रॉब्लम है, which ultimately leads to the decline of the Mughal empire. He says that the zamindars, they are local magnates, and with the changing conditions they align at times with the peasantry, creating problem for the nobility or for the jagirdars. At times they align with the jagirdar and then creates problem for the peasantry, and they also play very important role in negotiation with the state. क्योंकि धीमे धीमे जब हम लोग और आगे की बातचीत करेंगे, then you will understand कि किस तरीके से जमींदार अपने को असर्ट कर रहे हैं या अपने को और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं. इसमें दो बातें और मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, बिकॉज देन इट विल बिकम वेरी क्लियर टू यू. जो जागीरदारी सिस्टम है, जो रेवेन्यू वसूला जाना है, दैट इज जस्ट टू गिव यू रिकैप कि जागीरदार को एक भूमि अलॉट कर दी जाती है कि इस भूमि से होने वाली आय आपकी है. ये आय जो कृषि का उत्पादन है, एग्रीन प्रोडक्शन है, उससे आपको मिल रहा है. एग्रीन प्रोडक्शन टेक्स प्लेस यूजुअली ट्वाइस इन अ ईयर. तो as a zamindar, as a jagirdar, I have to wait for the production. जब तक अनाज तैयार नहीं हो जाएगा तब तक मुझे लैंड रेवेन्यू नहीं मिलेगा. which means there is a lean period and there is a period of plenty. plenty का पीरियड वो है जब फसल कट के आ गई है और उसमें से जो हिस्सा मुझ तक आना है वो मुझ तक आ रहा है. दूसरा ये है, अब आपकी प्रॉब्लम ये है कि एज अ जागीरदार यू माइट बी ट्रांसफर्ड, आपका ट्रांसफ़र हो जा रहा है, तो जो रेवेन्यू आपको वसूलना था अभी तो तैयार ही नहीं हुआ है. जब फसल तैयार ही नहीं हुई है तो मुझे वो फसल में से मेरा हिस्सा कहाँ मिलेगा. सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग रोल ऑफ द मनी लेंडर्स. जो महाजन हैं, जो उधार पे देते हैं, उनका रोल बढ़ता जा रहा है, बिकॉज नाउ दे आर लोकल, दे फिनेंस और दे ऑफर मनी टू द जागीरदार कि हुजूर ये आप रखिए, एंड वेन एवर एग्रीन प्रोडक्शन विल टेक प्लेस इट विल बी कलेक्टेड एंड आई विल गेट दैट. मतलब जो मेरा हिस्सा है वो मुझे वहाँ से मिल जाएगा. इसका मैनिफेस्टेशन, इसका जो कंक्रीट एग्जाम्पल सतीश चंद्रा साहब देते हैं वो दो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ. एक, आमतौर के ऊपर जो इनकम दी जा रही है, जो जिसको हम लोग शाहजहाँ के काल में कहते हैं मंथ स्केल इंट्रोड्यूस करना पड़ा कि आपको जो भूमि दी गई है, आपको जो लैंड रेवेन्यू असाइन की है, जो लैंड रेवेन्यू असाइन किया गया या जो लैंड असाइन की गई जहाँ से रेवेन्यू आपका आना है, वो रेवेन्यू उतना नहीं आ पा रहा है, विच मीन्स द असेसमेंट इज हायर एंड द रियल कलेक्शन और द हासिल इज लोअर. इन दैट कॉन्टेक्स्ट अल्टीमेटली इट इज द हासिल विच मैटर्स.
जामा आप कुछ भी कर दीजिए, जामा आप कुछ भी कह दिए, कैलकुलेशन आप कुछ भी कर दिए कि दिस इज गोइंग टू बी प्रोडक्शन ऑफ दिस ईयर, बट what is actually produced, that is the crucial thing, or that is the most important thing. And there's a gap between JAMA and HAS, is a gap between assessment and the collection. तो जो जागीर हैं वो आमतौर के ऊपर 6 माही दी गई है, 5 माही दी गई है. मतलब while allotting it to you, it is stated that we are giving you this revenue assignment, for example, which should provide you rupees 1 lakh. But in fact, it will be giving you only 50,000 or 30,000 or 60,000. So proportionately, it was said that आपकी जो मनसब जो जागीरदारी है वो तिमाही है, 6 माही है, 5 माही है. मतलब जो 12 महीने का इनकम आपकी होनी चाहिए, उसमें से जो आपको मिल पा रहा है, इट माइट बी 5 मंथ का ही मिल पा रहा हो, 4 मंथ का ही मिल पा रहा हो. डेक्कन में और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि डेक्कन के अंदर थोड़ा प्रोडक्शन नॉर्थ इंडियन प्लेन्स के मुकाबले कम है. सो वहाँ के ऊपर जामा ऊपर है, असेसमेंट काफ़ी हायर चल रहा है, एंड द कलेक्शन इज़ लोअर और द हासिल इज़ लोअर. सो जो लैंड रेवेन्यू आपको असाइन किया जा रहा है एज अ जागीरदार, वो प्रोपोर्शनेटली कम हो रहा है. एंड अकॉर्डिंगली आपकी पर्सनल सैलरी तो नहीं कम की जा रही है, बट द नंबर ऑफ कंटिजेंट यू आर मेंटेनिंग इज बिंग रिड्यूस्ड. सो सतीश चंद्र साहब ये कहते हैं कि जागीरदारी क्राइसिस को समझने के लिए आपको उसके कॉम्प्लेक्सिटी में समझना पड़ेगा. वो कॉम्प्लेक्सिटी विच इंटीग्रेट्स द एडमिनिस्ट्रेशन एंड द लैंड रेवेन्यू, एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एग्रीगेट प्रोडक्शन, लैंड रेवेन्यू एंड द कैरेक्टर ऑफ द एग्रीगेट प्रोडक्शन. इस कॉन्टेक्स्ट में आपको समझना पड़ेगा. इसी बात को आगे बढ़ाया कैरिन लियोनार्ड ने, एंड ही आर्ग्यूड दैट जो मनी लेंडर है, दे प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल बिकॉज दे यूज टू फिनेंस. आप ये हुजूर अपने पास रखिए, आई विल एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द योर लोकेलिटी, योर असाइनमेंट. ये बहुत ज़्यादा सब्सटेंशिएट नहीं हो पाया, क्योंकि कुछ और भी फैक्टर्स हैं विच प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि देर आर एविडेंसेज ऑफ प्रोग्रेस और द ग्रोथ, which means the Mughal decline can be seen with the decline of the central structure, central edifice, which all of them have been discussing. But this formulation of this historiography was later modified or challenged by the region-centric approach. कि अगर हम एम्पायर को छोड़ दें और जो प्रांत हैं, जो छोटे प्रोविंसेस हैं, उनको फोकस में रखें, तब भी क्या वही पिक्चर इमर्ज करती है जो लार्जर पिक्चर है, जिसको आप कह रहे हैं एग्रीरियन क्राइसिस या जागीरदारी क्राइसिस और या रिविजिट टू जागीरदारी क्राइसिस. मतलब हिस्टोरियंस लाइक मुजफ्फर आलम, हिस्टोरियंस लाइक चेतन सिंह, व्हाट दे डिड, उन्होंने प्रोविंसेस को एग्जामिन किया, उन्होंने प्रांतों को एग्जामिन किया कि प्रोविंसेस में क्या चल रहा है. हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को समझ रहे हैं, इसके अंदर ये इश्यूज चल रहे हैं, बट प्रोविंसेस में क्या चल रहा है, क्षेत्र में क्या चल रहा है. मुजफ्फर आलम एग्जामिन्स द केस ऑफ अवध. अवध के बारे में वो बात करते हैं कि अवध के इलाके के अंदर जो मदद माश ग्रांट होल्डर हैं, मदद माश ग्रांट होल्डर राज्य दिया करता था, आर्टिस्टों को देता था, रिलीजियस अथॉरिटीज़ को देता था, और अपने पैट्रनाइज करने के लिए कोई दरबार में गया तो उसको एक मदद ग्रांट दे दी गई. इसकी एक पॉलिटिक्स थी, ऐसे नहीं दे दी जाती थी. उसकी पॉलिटिक्स ये थी कि ऑन द वन वी हैव जमींदार्स, हमारे पास जमींदार हैं जो ट्रेडिशनली उस इलाके में रह रहे हैं. Along with that, what state is doing, state is implanting, अपने लोगों को वहाँ प्लेस कर रही है by giving them the Madad Marsh grant. These Madad Marsh grant holders are directly dependent on the state. Unlike zamindars who have local connections, who have a traditional right, a hereditary right, these Madad Marsh grant holders does not have, they don't enjoy any kind of hereditary traditional right. So they were entirely dependent on the will and the wish of the रूलर, बट दे वर प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल. लोकल इलाके के अंदर, गांव के इलाके के अंदर, कस्बे के अंदर, अलॉन्ग विद जमींदार्स, देयर इज अदर ग्रुप विच इज बीइंग कल्टिवेटेड बाय, विच इज बीइंग पैट्रोनाइज्ड बाय द मुगल एम्पायर, सो दैट दे कैन काउंटर बैलेंस द ग्रोइंग इन्फ्लुएंस ऑफ द जमींदार. क्योंकि समझ रहे हैं कि हमारे सिस्टम में वी आर टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट डिपेंडेंट ऑन द जमींदार्स. टू काउंटर दिस, they are also placing Madad-e-Marsh grant holders, which means those who are directly dependent on the will and the wish of the emperor. So they will remain loyal by force, by definition, to the Mughal empire. They don't have the option because they don't have anything to back, to rely back on the from the local areas. कोई traditional rights नहीं है, उनका कोई traditional connection नहीं है. They are primarily appointed by the state.
इसी रिलेशन को मेंटेन करने में later Mughal Empire is not very able to maintain that, and that leads to the collapse of the system, जिसकी वजह से ये बात शुरू हो जाती है कि ये जो पावर रिलेशंस हैं इसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा. इसी स्टडी को एग्जामिन आगे बढ़ा देते हैं चेतन सिंह, एंड चेतन सिंह सेज दैट while examining the Punjab, मुजफ्फर साहब ने पंजाब और अवध को कंपेयर किया था, बट चेतन सिंह एग्जामिन्स प्राइमरली पंजाब, एंड ही सेज दैट पंजाब में प्रॉस्पेरिटी तो बढ़ रही है, बट देयर आर अदर फैक्टर्स विच आल्सो प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दो वन ऑफ a few of them those I'll just simply point it out to you. एक शाह ऑफ ईरान से उनके संबंध बिगड़ रहे हैं, आप जानते ही हैं कि बाल्क एंड बदख्शां का जो पूरा एक्सपीडिशन चल रहा है विच इज़ नॉट सक्सेसफुल, तो जो आपका जो फ्रंटियर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से मुगल रिलेशन विद दी वेस्ट एशिया इज बिंग डिस्टर्ब. सो जो ट्रेड रिलेशंस हैं उसके ऊपर असर पड़ रहा है, जो ट्रेड यहाँ से चल रहा था उसके ऊपर असर पड़ रहा है. साथ ही साथ ये भी आपको देखने को मिल रहा है कि यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी आ रही हैं. दूसरा जो इंडस वैली, इंडस रिवर है, इंडस रिवर में सिल्ट्रेशन हो रहा है, वहाँ के ऊपर सात ज़्यादा इकट्ठी हो रही है, तो इंडस का जो पोर्ट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं बच पा रहा है फॉर ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, जिसकी वजह से पंजाब की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ पे असर पड़ रहा है, जिसका अल्टीमेट परिणाम ये होता है कि सिखिज्म को ज़्यादा बढ़ावा मिलता है, क्योंकि सिखिज्म में वो लोग जुड़े हुए हैं जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ से जुड़े हुए थे. सो देयर आर कंट्राडिक्टरी एविडेंसेस हमारे पास आ रही हैं. एग्रीन प्रॉस्पेरिटी भी हो रही है, बट चूंकि मुगल ट्रेड डिक्लाइन कर रहा है, सो देयर सेक्शंस हु आर डिपेंडेंट ऑन ट्रेड, दे आर रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट. सो चेतन सिंह और मुजफ्फर आलम आपसे ये बात कह रहे हैं कि खाली मुगल स्टेट को देख के बात मत कीजिए, बट जो रीजन सेंट्रिक चेंजेस हैं, जो स्पेसिफिसिटीज़ हैं, जो वहाँ की स्पेशल कंडीशंस हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में आप इस सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए. यही बात हम लोग 18th सेंचुरी डिबेट में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं कि there is a transition in politics and economy, but that transition should not always be seen in terms of negative. There are positives also. ये डिबेट हम जारी रखेंगे आगे भी, because we need to discuss the great divergence debate. So in the next session when we'll discuss the great divergence debate. As a bibliography, you can see the BHIC 112, and you can also see Cambridge Economic History of India, Volume 1. Thank you very much. Are you interested in television journalism or radio journalism or online journalism? Or do you want to learn with the flexibility of open learning? Or if you are a working professional, wants to enhance your knowledge and skill with certification in the field of electronic media, then School of Journalism and New Media Study, IGNOU, offers PG Diploma in Electronic Media for you. This program includes audio and audio-visual program production for radio, television and online platforms. Here are some important details about the program. We have total 8 courses of 32 credits, 6 theory courses, 1 practical and 1 project. Eligibility: bachelor's degree in any subject. Minimum duration 1 year, maximum 3 years. Medium is English, but students can write their examinations, assignments, practical and project in Hindi also. So if you are interested in television, radio or online media, please come and join IGNOU's PG Diploma in Electronic Media.
संस्कृत का नाम लेते ही हम अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर तुरंत ये हमारे मस्तिष्क में आता है कि धातु रूप, शब्द रूप ही संस्कृत है। फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं तो संस्कृत के ग्रंथों के नाम हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं कि संस्कृत में कौन कौन से ग्रंथ हैं। तो अनायास ही हम वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, रामायण, महाभारत, गीता, इस प्रकार से इन ग्रंथों का स्मरण हमें हो जाता है। उसके पश्चात यदि हम लौकिक ग्रंथों की बात करें तो तुरंत हमारे लिए कवि कालिदास, भवभूति, अश्वघोष आदि की रचनाएं हमें याद आ जाती हैं कि कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम आदि ग्रंथों का निर्माण किया है। तो हमारे समक्ष इनके रचित ग्रंथ आ जाते हैं। ऐसे ही उत्तर रामचरितम आदि। तो जो संस्कृत में ये ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों को क्या कहा जाता है, ये ग्रंथ कैसे हैं, इनका क्या लक्षण दिया गया है। संस्कृत में दो प्रकार के हमारे लिए ग्रंथ मिलते हैं। एक तो ये काव्य ग्रंथ और एक काव्य शास्त्र के नियमों को बनाने वाले काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। तो क्या काव्य की कोई परिभाषा दी हुई है? काव्य किसे कहते हैं? आज का हमारा जो विषय है वो इसी से संबंधित है कि काव्य का क्या काव्य के शास्त्रियों ने लक्षण दिया है, उसका क्या हेतु है, उसका क्या प्रयोजन है। तो हम इसको विस्तार से जानने के लिए आज हम काव्य का लक्षण, काव्य का हेतु और काव्य के प्रयोजन को समझेंगे। काव्य का लक्षण, हेतु और प्रयोजन हम आचार्य मम्मट के काव्य प्रकाश के आधार पर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आचार्य मम्मट एक महान काव्य शास्त्र के निर्माता हुए हैं। इन्होंने काव्य शास्त्र का ग्रंथ काव्य प्रकाश लिखा। इस काव्य प्रकाश में इन्होंने काव्य का लक्षण दिया कि काव्य किसे कहते हैं। तो आचार्य मम्मट कहते हैं कि तददोषौ शब्दार्थौ सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि, ये उन्होंने लक्षण दिया है। तो इस लक्षण का जो शाब्दिक अर्थ है वह यह है कि काव्य कैसा होना चाहिए। काव्य में काव्य दोष रहित होना चाहिए। जो तद शब्द यहाँ पर काव्य का वाचक है। इससे पहले काव्य का वर्णन चला है, तो तद से यहाँ पर हम काव्य को लेंगे। तो आगे है अदोषौ। अदोषौ का मतलब है जिसमें दोष नहीं है, दोष रहित है। शब्दार्थौ, शब्द और अर्थ, शब्द और अर्थ। सगुणौ, कैसा होना चाहिए शब्द और अर्थ? गुण युक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? अनलंकृति पुनः क्वापि, मतलब सर्वत्र अलंकार होना चाहिए, किंतु कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार के न रहने पर भी वो काव्य कहलाएगा। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, वह यह है कि केवल शब्द काव्य नहीं होता है, केवल अर्थ काव्य नहीं होता है, बल्कि दोनों शब्द और अर्थ मिलकर के काव्य होते हैं। शब्द और अर्थ कैसे होते हैं? तो बताया कि शब्द और अर्थ कैसा होना चाहिए। केवल शब्द ही कोई हम ले लेंगे तो वो काव्य नहीं कहलाएगा। जैसे डित्था, ये काव्य नहीं कहलाएगा। और शब्द और अर्थ दोनों भी काव्य नहीं कहलाएंगे। वो कैसा होना चाहिए? तो बता रहे हैं कि वो दोष रहित होना चाहिए, दोष नहीं होना चाहिए उसमें। और क्या होना चाहिए? गुण युक्त होना चाहिए। और अलंकार तो होना ही चाहिए, किंतु कहीं पर स्फुट अलंकार नहीं है तो भी काव्यत्व की कोई हानि नहीं होती है। यहाँ पर दोष, गुण और अलंकार को समझने से पहले एक हम लौकिक उदाहरण को समझेंगे कि जैसे हम किसी मनुष्य के विषय में ये कहते हैं कि इस मनुष्य में ये दोष है, कि जैसे वो निंदा करता है, चुगली करता है, इधर की उधर करता है, तो ये मनुष्य के दोष हैं। और मनुष्य के यदि हम गुण देखें तो वो समय पर काम को करने वाला है, वह गोरा है, वह काला है, इत्यादि उसके अंदर गुण हैं। और जो अलंकार जो यहाँ पर प्रयुक्त है, अलंकार का मतलब आभूषण है।
तो जैसे मनुष्य के जो शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार आभूषण होते हैं, वैसे ही जो काव्य है शब्द और अर्थ उसकी शोभा को बढ़ाने वाले अलंकार हैं। तो ऐसे ही जो शब्द अर्थ है वह काव्य कहलाएगा। काव्य कब कहलाएगा? जब उसमें दोष नहीं होगा। अब दोष कैसा है, शब्द और अर्थ का दोष कैसा है, तो इसका विस्तार पूर्वक विवेचन आचार्य मम्मट ने काव्य प्रकाश में किया है। तो वहाँ पर 16 प्रकार के दोषों को उन्होंने गिनाया है। तो उसी में से जैसे श्रुति कटु आदि दोष हैं, तो वह दोष नहीं होना चाहिए। तो दोष क्या करते हैं? ये रसों के अपकर्षक होते हैं, मुख्य अर्थ के अपकर्ष करने वाले होते हैं। तो दोषों का जो कार्य है वो रस के अपकर्षक हैं, रस की अवनति को करने वाले हैं, रस की काव्य की नीचता को दिखाएंगे वहाँ पर। तो इसलिए क्या है कि इसमें दोष नहीं होना चाहिए, श्रुति कटु आदि जो दोष हैं वो नहीं होना चाहिए। और ये दोष किसके हैं? तो जो आचार्य मम्मट कहते हैं कि जो दोष हैं वो रस के ही हैं। मुख्य जो अर्थ है वो रस है और रस के ही ये दोष हैं। अतः रस के अपकर्ष करने वाले जो भी 16 प्रकार के दोष हैं वो काव्य में नहीं होने चाहिए। आचार्य मम्मट का ये मानना है, दोष यदि रहेगा तो वो काव्यत्व की श्रेणी में नहीं आएगा, वो उसका अपकर्षक कहलाएगा कि ये इस प्रकार का काव्य है, ये काव्य अपकर्ष वाला काव्य है। और क्या होना चाहिए? उसमें गुण होने चाहिए। तो गुण जो है माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि ये गुण हैं, ये गुण होने चाहिए काव्य के अंदर। तो गुणों का कार्य क्या है? जैसे मनुष्य है, मनुष्य के अंदर गुण हैं, तो गुण उसके आत्मा के होते हैं। ऐसे ही जो गुण हैं वो रस के गुण हैं। जैसे मनुष्य को हम कहते हैं कि ये सूरवीर है, ये सिंह के समान है, ये सब उसके गुणों को बताते हैं। तो ये गुण किसके हैं? उस आकृति के हैं कि आत्मा के हैं? तो ये जो गुण हैं वो वास्तविकता में आत्मा के हैं, ना कि शरीर के गुण हैं। यद्यपि हम लौकिक व्यवहार में क्या देखते हैं कि जिसका शरीर के आकार प्रकार से जो देखने में विशालकाय है उसको हम सूरवीर मान लेते हैं, लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है। हम लौकिक उदाहरणों में इसके प्रतिकूल भी चीज़ों को देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है, लेकिन वो सूरवीरता उसके अंदर है, सूरवीरता के उसके अंदर कार्य हैं। जैसे आप महाराज शिवाजी को ले लीजिए। महाराज शिवाजी और अफजल खां दो किरदार हैं। शिवराज विजय एक ग्रंथ संस्कृत का है। तो शिवराज विजय में शिवाजी का शरीर छरैरा है और वो आकृति उतनी देखने में भयानक नहीं है, लेकिन अफजल खां भयानक है। तो जो गुण हैं वो शिवाजी आकृति से छोटे होने के बावजूद भी वो सूरवीर हैं, क्योंकि सूरवीरत्व जो गुण है वो आत्मा का है, ना कि शरीर का है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो गुण हैं वो वास्तविकता में रस के हैं, रस ही आत्मा है, ये आचार्य मम्मट मानते हैं। तो ये गुण हमेशा रस का उत्थान कराने वाले होते हैं, इसका उत्कर्ष कराने वाले होते हैं। दो प्रकार के शब्द हमारे पास में हैं, एक तो उत्कर्ष और एक अपकर्ष। दोष अपकर्ष को कराते हैं और गुण क्या है? उत्कर्ष को कराता है, उस काव्य को उच्च कोटि तक पहुंचाने वाला होता है। तो गुण जो है जैसे सूरवीरता आदि आत्मा के गुण हैं, वैसे ही माधुर्य, ओज, प्रसाद आदि जो गुण हैं वो रस के हैं। तो रस की उत्कर्षता को बताते हैं। तो आचार्य मम्मट जो हैं वो कह रहे हैं कि जो गुण हैं वो गुण रस के धर्म हैं, रस में रहते हैं, ना कि शब्द और अर्थ के हैं वो। तो रस ही मुख्य है। आचार्य मम्मट एक बात कहते हैं कि रस ही क्या है? मुख्य है। तो गुण जो हो गए, शब्द और अर्थ कैसा होना चाहिए? वो गुण युक्त होना चाहिए, हैं, तभी वो क्या है? काव्य कहलाएगा।
और वो दोष रहित होना चाहिए। आगे आचार्य कहते हैं तददोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलंकृति पुनः क्वापि। अलंकार तो सर्वत्र होना ही चाहिए, कहीं कहीं पर यदि अलंकार स्फुट अलंकार नहीं होगा तो भी काव्यत्व की हानि नहीं होती है, तो भी वो काव्य कहलाएगा। यहाँ पर विद्यार्थी समझने में एक गलती करते हैं, वो ये है कि वो ये मान लेते हैं इस पद का अर्थ कि सर्वत्र अलंकार होना चाहिए, किंतु कहीं कहीं पर अलंकार नहीं है तो भी चलेगा। यहाँ पर कहीं कहीं पर अलंकार नहीं है तो भी चलेगा, ये बात नहीं है। आचार्य मम्मट ने जब इसकी टीका लिखी है, वहाँ पर वो बताते हैं कि जो स्फुट अलंकार बिरहे, ये शब्द का प्रयोग करते हैं कि स्फुट रूप से अलंकार नहीं है, किंतु सर्वत्र अलंकार है। हम उसमें अलंकार को नहीं देख रहे हैं, हम वहाँ पर रस को देख रहे हैं। यदि रस का उत्कर्ष है तो भी वो काव्य कहलाएगा। वहाँ पर एक वो उदाहरण देते हैं, क्या या कौमार हरः स एव हि वरस् ता एव क्षैत्रक्षपास् तेचोन्मीलितमालती सुरभया प्रौढ़ा कदम्बानिलः सा चैवास्मि तथापि तत्र सुरत व्यापारलीला विधौ रेवारोदसी चेत बेतसी तरुतले चेतः समुत्कंठते। ये उदाहरण उन्होंने दिया है। स्फुट अलंकार यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई अलग चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर श्रृंगार की आधिक्यता है। यहाँ पर जैसे पति और पत्नी यहाँ पर अपने पति को स्मृत करती है कि मेरा जब पति से प्रथम मिलन हुआ था, तो वो उस स्थान विशेष को इस पद्य में स्मरण कर रही है कि रेवा नदी का तट है और वही बेतों का पेड़ है, कदम्ब के वृक्ष हैं, चमेली की खुशबू आ रही है और रेवा नदी की जो लहरें हैं वो कल कल बह रही है और बड़ी ही मंद मंद जो हवा है वो बह रही है। ऐसे वातावरण में मैं अपने पति के साथ इसी बेत्र जो वृक्ष है उसके नीचे कई बार मिली हूँ। सब चीज़ें यहाँ पर वही हैं, लेकिन फिर भी मिलने की जो उत्कंठा है वो मेरे अंदर हो रही है। ये यहाँ पर मतलब बताना चाह रहे हैं, यहाँ पर इस स्फुट अलंकार नहीं है। यद्यपि यहाँ पर खींच तान कर हम अलंकार ला सकते हैं, क्योंकि विशेषोक्ति, विभावना या रसवद अलंकार आगे के जैसे आचार्य लोगों ने मम्मट का खंडन जो किया है, आचार्य मम्मट का, वो केवल ऊपर की पंक्ति के आधार पर किया है। तो बाकी आचार्य मम्मट का यहाँ पर यही कहना है कि स्फुट रूप से हमें अलंकार नहीं भी यहाँ पर हो रहा है, किंतु रस का अधिक है। जैसे कि इस श्लोक में विप्रलम्ब रस है, रस का अधिक है, तो भी क्या है वो काव्य रहेगा। तो ये तददोषौ शब्दार्थौ सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि जो इनका लक्षण है वो उससे ये सिद्ध होता है कि जो केवल शब्द ही काव्य नहीं होता, केवल अर्थ भी काव्य नहीं होता, बल्कि शब्द और अर्थ दोनों मिलकर के काव्य होते हैं। शब्द और अर्थ की समष्टि काव्य तब होगी जब वह क्या होगा, दोष रहित होगा, गुण युक्त होगा और सर्वत्र अलंकार होगा। किंतु कहीं कहीं पर स्फुट अलंकार नहीं होगा तो भी कोई काव्यत्व की हानि नहीं है, तो भी वो काव्य कहलाएगा। स्फुट अलंकार का जो उदाहरण दिया उन्होंने वह यही दिया है कि ये कौमार हरह वाला श्लोक, इसको हमें काव्य प्रकाश के ग्रंथ में देख लेना चाहिए और उसकी टीका को भी पढ़ लेना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये जिस प्रकार से ये जो शरीर है वो काव्य एक क्या है, काव्य शरीर है, और शब्द और अर्थ वो क्या है, अंग हैं उसके। जैसे एक मानव का जो शरीर होता है, मानव का जो शरीर है वो हमारे लिए दिखाई दे रहा है, ऐसे ही काव्य एक शरीर है। और अंग क्या है हमारे, जैसे हाथ पैर नेत्र, ये सारे हमारे क्या है, अंग हैं। वैसे ही जो काव्य है वो तो काव्य का शरीर है, शब्द और अर्थ उसके अंग हैं और रस उसका अंगी है, आत्मा है।
तो जैसे मानव होता है, वैसे ही काव्य की आचार्य मम्मट व्याख्या करते हुए उसकी तुलना करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो माधुरी ओज प्रसाद ये क्या है, अंगी हैं, और ये किसके धर्म है, रस के धर्म है। रस ही क्या है, जैसे शरीर में आत्मा सर्वोपरि है, वैसे ही रस भी क्या है, सर्वोपरि है। तो ये रसस्यांगिनो धर्मा शौर्यादय आत्मनः उत्कर्ष हेतवास्ते स्यूरचलस्तथयो गुणा, ये कारिका है। और अलंकार कैसे होते हैं, अलंकार क्या है, शरीर की केवल शोभा को बढ़ाने वाले होते हैं। उपकुर्वन्ति तम संतम ये अंगद्वारेण जातुचित हारादिवद अलंकारस ते अनुप्रास उपमादया। अलंकार जो है आभूषण को कहते हैं, और आभूषण क्या है, हमारे शरीर की शोभा को बढ़ाता है। लेकिन शरीर की शोभा को जब ही बढ़ाएगा जब उसमें सौंदर्य गुण होगा। जब सौंदर्य ही नहीं होगा तो आभूषण भी हमारे शरीर की शोभा को नहीं बढ़ा सकता है। तो इसलिए गुण का होना काव्य में बहुत ही आवश्यक है। आचार्य मम्मट ने इस प्रकार से ये लक्षण हमें काव्य प्रकाश में समझाया है, हमें इसको समझना चाहिए। आगे काव्य के जो हेतु, काव्य का जो प्रयोजन है और काव्य का जो हेतु है, तो हम सबसे पहले काव्य के हेतु को यहाँ पर देख लेते हैं। काव्य के हेतु की चर्चा करते हुए आचार्य जो मम्मट हैं, वो अपने काव्य प्रकाश में लिखते हैं कि काव्य का हेतु का मतलब कारण है। यहाँ पर शक्तिर निपुणतः लोकशास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्यज्ञ शिक्षाभ्यासा इति हेतुस्तदुद्भवे। ये कारिका है। इस कारिका में काव्य के हेतुओं की चर्चा की है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया है कि शक्ति क्या है, शक्ति काव्य का हेतु है। और सबसे पहले शक्ति को बताया, फिर कहा निपुणता काव्य का हेतु है। निपुणता कैसे प्राप्त होती है, तो लोक शास्त्र और काव्य आदि के अध्ययन से प्राप्त होती है निपुणता। फिर उसके पश्चात बताया काव्यज्ञ, काव्यम जानाति इति काव्यज्ञः, जो काव्य को जानने वाला व्यक्ति है उसके नेतृत्व में रहते हुए उससे शिक्षा ग्रहण करना और वहाँ पर अभ्यास करना, ये मिलाकर के तीनों क्या है, मिलाकर के हेतु हैं, अलग अलग हेतु नहीं है। तो एक एक यदि एक एक पद पर चर्चा करें तो शक्ति क्या है, ये ही इसी को आचार्यों ने प्रतिभा कहा है। शक्ति ये एक संस्कार विशेष बताया आचार्य मम्मट ने कि ये जो है जन्म जन्मांतर से हमारे लिए प्राप्त होती है। हम जैसे लौकिक ऐसे उदाहरण बहुत सारे हमारे इर्द गिर्द होते हैं कि जो व्यक्ति पढ़ा नहीं है फिर भी वो उसके पास शक्ति है और वो पद्यों की रचना कर रहा है, वो कवि का कार्य कर रहा है। तो इस प्रकार से जो शक्ति है वो नैसर्गिक है, ईश्वर प्रदत्त है, जन्म जन्मांतरों का संस्कार है। तो इसके अभाव में काव्य नहीं बन सकता। तो शक्ति का होना बहुत ही आवश्यक है। आगे आचार्य कहते हैं निपुणता। निपुणता कैसे प्राप्त होती है, तो कहते हैं लोक जो हमारे लिए दिखाई दे रहा है सारा संसार, वो लोक में आता है। लोक को पहने दृष्टिकोण से, पैनी नज़र से एक एक वस्तु का अध्ययन करना चाहिए। स्थावर जंगम जो लोक हमारे लिए दिखाई दे रहा है उसका हमारे लिए क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। उस पर दृष्टिपात करके जगह जगह के भौगोलिक हमारे लिए अध्ययन होना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कवि कालिदास के मेघदूतम में पूरा वो सारे लोकों का उसमें वर्णन किया है कि कहाँ पर कौन सी नदी है, कहाँ कौन सा पर्वत है, कहाँ क्या है। ये लोक का उदाहरण है कि लोक का भी एक अध्ययन उन्होंने किया है। लोक का भी एक अध्ययन होता है, वो लोक का अध्ययन उनके काव्यों में दिखाई देता है। तो लोक से भी निपुणता प्राप्त होती है और शास्त्रों से तो होती है। हमारे वेद, रामायण, महाभारत, उपनिषद, ये सारे षड दर्शन, योग दर्शन आदि षड दर्शन हमारे जो है वो सब शास्त्रों के अंतर्गत हैं। इन शास्त्रों से पढ़ करके एक सुयोग्य गुरु के निर्देशन में इनको पढ़ना चाहिए, तब हमारे लिए निपुणता प्राप्त होती है। और काव्य आदि जो कवियों ने जिनका निर्माण किया है, कालिदास आदि कवियों ने, वाल्मीकि आदि ऋषि महर्षियों ने जो रामायण महाभारत रचे हैं, उनका भी हमें अध्ययन करना चाहिए, तब निपुणता प्राप्त होती है। तो लोक से निपुणता प्राप्त हुई, शास्त्र से निपुणता प्राप्त हुई और
काव्य से निपुणता प्राप्त हुई। तो दो चीज़ें हो गई, एक पहला शक्ति और निपुणता। फिर उसके पश्चात है काव्यज्ञ शिक्षया अभ्यासा। काव्यज्ञ, काव्यज्ञ उस व्यक्ति को कहा जाता है जो काव्यम जानातीति काव्यज्ञ, काव्य को जानता है, काव्य का जिसने निर्माण किया है। ऐसे उच्च कोटि के व्यक्तित्व के निर्देशन में रह करके क्या करना चाहिए, काव्य बनाने का अभ्यास करना चाहिए, काव्य का निर्माण करने का अभ्यास करना चाहिए। तो ये तीनों मिलाकर के हेतु हैं, ना कि एक केवल होगा तो काव्य का निर्माण आप कर पाएंगे। आचार्य कहते हैं इति हेतु न तो हेतवः, बहुवचन का प्रयोग नहीं करते हैं वहाँ पर, यहाँ पर हेतु शब्द का प्रयोग किया है। और टीका में लिखा है इति हेतु न तो हेतवः। इसका यही अभिप्राय है कि ये तीनों मिलकर के उसका कारण बनेंगे। आगे काव्य के प्रयोजन पर चर्चा करें। आचार्य मम्मट काव्य का क्या प्रयोजन है, क्योंकि भाई जो काव्य बनाया जा रहा है उसका क्या प्रयोजन रहेगा, काव्य का निर्माण क्यों किया जा रहा है। तो क्योंकि प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते, ये संस्कृत में कहावत है ही है, बिना प्रयोजन के तो कोई कहीं पर किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती है। तो आचार्य मम्मट काव्य का प्रयोजन बताते हुए कहते हैं काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे शिवेतरक्षतये सद्यः परिनिर्वृत्तये कांता सम्मित तयोपदेश युजे। ये कारिका मिलती है। इसका अभिप्राय ये है कि काव्यम यशसे, काव्य से क्या प्राप्त होता है, यश की प्राप्ति होती है। जैसे वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है। आज वाल्मीकि ऋषि हमारे समक्ष शरीर रूप में विद्यमान नहीं है, किंतु उनकी बनाई हुई जो रामायण है जिसमें प्रभु श्री राम का वर्णन है, वो आज भी शरीर रूप में न विद्यमान होने पर भी आज भी उनका यश रूप में वो आज विद्यमान है। तो काव्य के निर्माण से यश की प्राप्ति होती है। और लौकिक उदाहरणों में कालिदास को देख लीजिए। कालिदास एक ऐसे कवि हैं जो कि इस भारत देश के ही नहीं अपितु विश्व के सारे पाश्चात्य लोग भी उनकी सराहना करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम को देख करके विदेशी हतप्रभ है कि इतना अच्छा ग्रंथ का निर्माण करने वाला भारत भूमि पर कोई कवि हुआ है। और वो कहते हैं कि ये कोई साधारण प्रतिभा नहीं है, ये शेक्सपियर के समकक्ष ही है। तो कालिदास का जो यश है वो आज भी विद्यमान है। ये कालिदास यद्यपि नहीं है, वाल्मीकि नहीं है, अश्वघोष नहीं है, भवभूति नहीं है, लेकिन वो अपने काव्य के कारण आज भी विद्यमान है, उनका यश विद्यमान है। तो काव्य से क्या होता है, यश की प्राप्ति होती है। और क्या है, अर्थकृते, अर्थ की प्राप्ति हो रही है। अर्थ, जब हम काव्य ग्रंथ का निर्माण कर लेते हैं तो हमें उसकी अर्थ की प्राप्ति होती है। प्राचीन काल में हम देखेंगे तो राजाओं के नेतृत्व में रह करके काव्य का निर्माण होता था और राजा प्रभुत धन खुश हो करके कवियों को दिया करते थे। और कभी भी किसी राजा के नाम पर ग्रंथ को लिख करके क्या है उस कवि से उस राजा से धन को ले लेते थे। तो अर्थ की प्राप्ति होती है। आज के युग में भी हम किसी ग्रंथ को लिखते हैं तो वो ग्रंथ हमारा बिकता है और अर्थ की प्राप्ति होती है। ऐसे ही व्यवहार विदे, अब ये क्या है, व्यवहार की शिक्षा देता है कि हमें राम के समान आचरण करना चाहिए, रावण के समान आचरण नहीं करना चाहिए। राम ने अच्छा आचरण किया है तो आज उनका यश विद्यमान है, और रावण ने अनाचार किया है, अत्याचार किया है तो वो अपयश के रूप में आज विद्यमान है। तो हमें जो काव्य है, रामायण आदि और जो भी काव्य हमें प्राप्त होते हैं उनसे हमें व्यवहार का ज्ञान होता है। और शिवेतर क्षतये, जो शिव कहते हैं कल्याण के लिए, और इतर उससे भिन्न अर्थात अमंगल का क्या करता है, नाशक होता है काव्य। तो इससे अमंगल का नाश होता है। जैसे काव्य को हम पढ़ेंगे तो उसको अमंगल का नाश होगा। जैसे कई कवियों के वृतांत इसमें मिलते हैं कि भाई जो मयूर कवि हैं वो कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गए थे, उन्होंने सूर्य शतक लिखा और उसके बाद उसकी स्तुति की तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया। और ये सद्यः परिनिर्वृत्तये है कि शीघ्र ही आनंद की प्राप्ति कराने वाला है। हम जैसे रामचरितमानस को ले लें, उसकी चौपाइयाँ जब हम दोहराते हैं तो तुरंत हमारे लिए क्या होता है, आनंद की प्राप्ति होती है। गुनगुनाने लगते हैं, कोई सुनता है तब भी हमें आनंद की प्राप्ति होती है। कांता सम्मित तयो उपदेश हो जे, और ये कैसा है, पत्नी के समान
व्यवहार पत्नी के समान क्या है हमारे लिए उपदेश करता है। काव्य से जैसे कांता जो होती है, पत्नी होती है, वह अपने पति को रस भरी बातों से अनुकूल बना लेती है, वैसे ही जो काव्य है वो काव्य ऐसा होता है कि अब अनुकूलता प्रदान करता है। तो हमने यहाँ पर आज आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण, काव्य का हेतु, काव्य का प्रयोजन समझने का प्रयत्न किया। आपने बहुत ही ध्यानपूर्वक इस को सुना और काव्य के लक्षण को, काव्य के हेतु को, काव्य के प्रयोजन को आपने बहुत ही ध्यान से सुना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।